Hi everyone and welcome back to another video of Chemistry in Everyday Life. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about different types of drugs, their names, their structures, what functions they have and what not. तो ये जो टॉपिक है ना, this is very important from the examination point of view क्योंकि यहाँ पे या तो हमें आता है या तो हमें नहीं आता है. There's nothing in between, okay? So grab a copy, grab a pen, make your own notes and keep revising that. I'll only say that and on that note I will start with today's video. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ड्रग्स एंड देयर थ्योरेपेटिक एक्शन. इन 5 ड्रग्स को डिस्कस करेंगे एज पर दी एनसीईआरटी में जो भी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड यू डोंट इवन हैव टू गो अहेड एंड रीड योर एनसीईआरटीज. आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस, ओके? जस्ट मेक योर ओन नोट्स बाय वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर डन फॉर लाइफ. सबसे पहला है हमारा एंटासिड्स. Then we have antihistamines, we have neurologically active drugs, we have antimicrobials and we have antifertility drugs. सबसे पहले बात करते हैं about antacids. So just as the name suggests, antacids means something which is going to work against the acids or anti-acids. तो ये जो medicines होंगी which are going to be called antacids, these are going to work against acids. अब ये कौन से acid के against work करने वाली है? Let's find that out. So in our bodies, we have a system to digest the food that we eat and that is called the digestive system in our bodies. हर एक डिफरेंट ऑर्गन का अपना एक रोल होता है और हमारा स्टमक का ये रोल होता है कि इट प्रोड्यूसेस एन एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डाइजेस्ट द फूड दैट यू आर ईटिंग, ओके? बट समटाइम्स and most of the times it happens that people generally eat the food which is not very good for our health and in that case what happens is कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो होना चाहिए बट इन लिमिटेड क्वांटिटीज, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है एंड इन दैट केस वी हैव व्हाट यू कॉल एसिडिटी. प्लीज़ रिमेंबर, हमेशा याद रखना, एसिडिटी इज़ जस्ट अ सिम्टम एंड द प्रॉब्लम lies in the fact कि hydrochloric acid excess में produce हो रहा होता है, okay? So the actual problem is the excess production of hydrochloric acid and the symptom that you guys see is the acidity, okay? So now एक बहुत ही general और normal explanation ये बोलती है कि if you have acid somewhere और हमें वहाँ से acid को हटाना है, what we can do is we can simply add some base, okay? Because we know that acids plus bases give salt and water and ये एक बहुत ही simple neutralization reaction होता है. So it's a very quiet and reasonable explanation कि अगर if you have acidity you can just take bases, okay? And that is going to neutralize everything. तो इसलिए सबसे पहला solution जो acidity का आया था that was nothing but bases like sodium hydrogen carbonate and mixed hydroxides of aluminum and magnesium. अगर आप वो ingest कर लेते हो, so in that case the acids will be neutralized and everything will be good to go, okay? But the problem is that one more thing happens. So whenever you are taking excess bases, the acid quantity is going to further increase and this is something which we know because of the Lee-Chatelier principle. I hope you guys know कि Lee-Chatelier's principle क्या होता है. We have learned about that in our 11th standards. So the point being कि हमारा जो basis employ करने का जो idea था ना, it was quite good for a while, but we have to understand कि वो सिर्फ symptom को हटा रहा है, यानी कि acidity को हटा रहा है. The actual problem which is the production of the acid, उसको ये touch भी नहीं कर रहा है, ठीक है? So the drug which we are going to talk about right now, which is antacid, is going to work on this actual problem which is production of the acid, ठीक है? तो हमारे जो स्टमक वॉल पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन. दिस इज क्वाइट अ वेरी डेविल एंजाइम और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ. बट दिस हिस्टामिन इज गोइंग टू अटैच और इज गोइंग टू रिएक्ट विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल और एक मैसेज प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है HCl एंड दैट कॉजेज ऑफ कोर्स एसिडिटी. तो हम एक ऐसे ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ योर ऑफ कोर्स एंटासिड. ये ड्रग क्या करता है, इट इज़ गोइंग टू कम्पीट विद द हिस्टामीन्स और हिस्टामीन को ये अटैच नहीं करने देगा विद द रिसेप्टर. इंस्टेड ऑफ दैट ये खुद जाके अटैच हो जाएगा और जो मैसेज था विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ मोर एंजाइम पेप्सिन इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इसलिए हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एसिड वो ही हमारी ख़त्म हो जाती है. एंड दिस इम्पॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए इज़
सिमेटिडीन, जिसको हम प्यार से टेगामेट भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम विच यू गाइज एब्सोल्युटली हैव टू रिमेंबर. एंड ये क्योंकि हमारा फर्स्ट ड्रग था जो कि इस काम के लिए आया था या इस काम के लिए एम्प्लॉय किया गया था. ऑल्दो इसके बाद एक सेकेंड ड्रग आया जो कि ऑफकोर्स एडवांस था, बट अगेन द सेम यूज वॉज देयर, इट वॉज ऑल्सो एन एंटासिड, और उसका नाम था रैनिटिडीन, या उसको हम जैंटैक भी कहते थे. ठीक है, सो द फर्स्ट ड्रग वॉज सिमेटिडीन और टेगामेट, एंड द सेकेंड ड्रग विच वॉज एडवांस बट फॉर द सेम इशू वॉज रैनिटिडीन या फिर जैंटैक. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इट्स क्वाइट जस्ट अ समरी दैट हिस्टामिन इज अ डेविल केमिकल दैट causes acidity by triggering the release of pepsin. I just hope you guys are noting this down because this is very very important. Please note this down if you guys are not. Okay, acidity can be neutralized by employing weak bases, but again this problem is not going to solve our solution. Then we have to solve the problem at its core, and for that we have the first drug for hyperacidity, which was cimetidine or tegamet, and the second drug for the same function was ranitidine or Zantac. Just remember this right now and then move on to the next slide. Okay, now what we also have to do is we have to remember the structures of these, which of course we will be doing in a while. Now ये जो हमारा histamine है, this is what it looks like, okay, which is the devil, as I already said. Then this is the structure of cimetidine, and this is the structure of ranitidine. So I hope you guys can take a snapshot of this particular slide or something, and then please memorize this, because this is one hell of an important question which is asked in the exams most of the times. Okay, now let's talk about the second class of drugs about which we are going to talk about in this video, which is nothing but antihistamines. So histamine already I think बहुत famous है. We have talked about histamine just 5 minutes back, which is it is a devil chemical. Okay, तो अभी ये devil क्यों था? क्योंकि ये release कर रहा था हमारी body में HCl, which is of course causing us acidity. Now we have more problems which is caused by histamines, which is it is a potential vasodilator, also associated with the nasal congestion causing common cold, and also produces allergic response to pollen. तो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से हिस्टामिन को डेविल कह रही हूँ, तो आई होप यू गाइज नो कि उसके पीछे रीजन तो है, राइट? सो नाउ वी हैव टू एब्सोल्युटली रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज टू ड्रग्स which are antihistamines, which means just like we have antacids, which is antacids, okay, we have something called antihistamines, and here these two drugs are going to inhibit the production of the devil chemical histamines. Okay, so please have your copy, have your pen, and please note these two down, which is bromophenramine and terfenadine. You guys absolutely have to remember the names and also the structures and also the short names. Okay, now let's talk about the next important class of drugs, jinka naam hai neurologically active drugs. Well, as the name suggests, these drugs are going to affect the nervous system of our bodies. हमारे body में कोई भी message हो, happiness का हो, sadness का हो, okay, whatever the, or pain का हो, whatever the messages, these messages are transferred from one body part to another with the help of certain small cells called neurons, and I hope everybody knows about them, right? और ये इतने important होते हैं कि message in फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक बॉडी पार्ट से दूसरी जगह बॉडी पार्ट पहुंच जाता है. ओके, सो दैट इज वाई दिस सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स बीइंग टुगेदर इन द बॉडी एंड वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडीज, और इसको इफेक्ट करेगा हमारा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग. These drugs are of two types. We have tranquilizers and we have analgesics. Okay, analgesics are of further two types. We have narcotic and non-narcotic analgesics. What is the difference between these two? Analgesics are these type of drugs or neurologically active drugs which are going to affect the nervous system, but they are not going to cause any kind of mental confusion or something. Whereas tranquilizers on the other hand are going to do that. They are basically used in stress, mental diseases, irritability, anxiety. So for all these reasons we use stuff like tranquilizers, whereas analgesics are used mainly for pain relief and all that. Okay, now as I already told you, in our bodies messages are transferred with the help of small signals. ठीक है, और इस signals को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? न्यूरॉन्स. अब न्यूरॉन्स में से कोई चीज़ पास करती है, एंड दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटर्स. ओके, दीज न्यूरोट्रांसमिटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जो है पास ऑन करते हैं. वन सच neurotransmitter is your noradrenaline.
This is a very important neurotransmitter because this is going to affect your mood. Okay, the quantity or the amount of noradrenaline is going to affect your mood in a very important way. तो अगर हमारी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन कम है तो यानी कि न्यूरो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी. ओके, यानी कि जो भी मैसेज है हैप्पीनेस का हो सैडनेस का हो वो easily बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. एंड फॉर दोज पीपल, you know, the people which have less amount of noradrenaline in their bodies, they suffer from what you call depression, and then they use drugs which fall into the category of tranquilizers, which are called antidepressants. Okay, I hope we are clear with what is antidepressants and what is the role of noradrenaline into that. So the quantity or the amount of this noradrenaline in the body is controlled with the help of antidepressants. ये करते क्या है antidepressants? These antidepressants are going to attack, okay, are going to inhibit the activity of those enzymes जो ख़त्म कर रहे हैं बॉडी में नॉरएड्रेनलिन को. ठीक है, तो अगर वो एंजाइम्स बचेंगे ही नहीं तो नॉरएड्रेनलिन ख़त्म नहीं होगा और उसकी क्वांटिटी बॉडी में मेंटेन हो जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग लो इन क्वांटिटी, with using antidepressants they are going to, you know, the quantity of noradrenaline is going to increase और इसलिए मैसेज बहुत easily one neuron to दूसरे neuron pass on करेगा, you know, thus counter affecting the effect of depression in anybody. Okay, that is why antidepressants, this is the actual working of any antidepressant per se. So to give a few examples, we have drugs like iproniazid, फेनल्जीन एंड इक्विनिल, और ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. ठीक है, वेर एज वी हैव माइल्डर, कंपैरेटिवली माइल्डर ड्रग्स लाइक मिप्रोबेमेट एंड क्लोरडियाजेपोक्साइड. ये हमारे माइल्डर ड्रग्स हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी एंड टेंशन. ओके, सो अगेन ये जो 4 नाम लिखे हैं स्क्रीन पे, एक्चुअली 5, यू हैव टू डेफिनेटली रिमेंबर दीज बिकॉज वेल दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम एज वेल. Moving on, we have our first question of the day, which is which out of the following is the first ever drug against hyperacidity? So I think सबको जिसने भी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है, and I think it's quite clear that the answer is Tegamet because the first one was Tegamet, which is also called Cimetidine, और दूसरा वाला था Zantac, which was called Ranitidine. Okay, but ये जो हम लोग आंसर दे पा रहे हैं हम इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज हमने लिटरली 5 मिनट्स पहले वो चीज़ पढ़ी थी. ओके, बट टू बी एक्चुअली एबल टू आंसर एंड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एग्जाम के टाइम पे, द first thing that you guys need to do is, I have been starting से telling you कि please make your own notes, keep memorizing, keep revising, क्योंकि literally बोल रही हूँ भूल जाओगे अगर revise नहीं करोगे तो. Okay, so okay, moving on, we have the next one which is barbiturates. So barbiturates में ये फोटो रखने का रीज़न एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बिकॉज barbiturates आर स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, सो अगेन इन दिस अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिफरेंट नेम्स जो हमें याद करने हैं. सो barbiturates हमारे होते हैं बार्बिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स including veronal, valium, serotonin, amytal, nembutal, लेम्यूनल एंड सिकोनल. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अनफॉर्चुनेटली याद करने हैं, बट ये हमारे हिप्नोटिक रिएजेंट्स होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस स्लीप. ओके, सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर दीज एंड नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू व्हाट आर एनाल्जेसिक्स. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनाल्जेसिक्स आर गोइंग टू रिड्यूस पेन without causing any disturbance to the nervous system of our bodies. Okay, तो ये एक short form में एक differentiation है between narcotic analgesics and non-narcotic analgesics. So to differentiate between narcotic analgesics and non-narcotic analgesics, ये हमारे major differences है between these two. और सबसे important difference तो ये होता है कि narcotic हमारे जो होते हैं they are addictive in nature whereas non-narcotic are not addictive in nature. Okay, अगर smaller quantities में हम narcotic agents किसी को देते हैं तो they are used mainly in relieving pain, और कोई छोटा मोटा पेन नहीं, बहुत एक्सट्रीम पेन लाइक द पेन इन चाइल्ड बर्थ और कैंसर्स और कार्डियक पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन. तो हाई अमाउंट ऑफ पेन के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम नारकोटिक्स अपने पेशेंट्स को देते हैं. ठीक है, एंड इफ़ द डोज इज समहाउ इंक्रीज्ड इट कैन ऑल्सो बी फेटल, लोग मर सकते हैं उससे. ठीक है, इफ़ द डोज इज समहाउ इंक्रीज्ड. एग्जाम्पल्स हैं हमारे मॉर्फिन, उसको एक ओपिएट कहते हैं बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम. क्लियर? Whereas the non-narcotic analgesics जो हमारे होते हैं, as I said, they are not addictive and they are used in smaller pains like, you know, skeletal pain. तो हमने कभी I don't think सुना होगा कि somebody is addictive to maybe paracetamol, okay? Because it's non-narcotic, right? Whereas people do get addicted to morphine and all these things because they are narcotic analgesics. So ये हमारे examples हैं aspirin and paracetamols, and people generally don't get addicted to all this, alright? So ये हमारे major differences है between narcotic and
नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, या फिर साथ साथ में नोट करो, बिकॉज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Again, moving on, we have these examples of analgesics which you guys, again, I will repeat myself, but you absolutely need to remember. We have morphine, heroin, and codeine. So people do get addicted to these, all right? Okay, so this is sort of a small summary of what all we have discussed. So maybe take a screenshot, maybe note it down, and on that note, we will move on. So the next class of drugs जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं is antimicrobials. Well, antimicrobials भी तीन तरीके के होते हैं. The first one is antibiotics, we have antiseptics, and we have disinfectants. So I know ये words तीनों की तीनों हमने बहुत बार सुन रखे हैं, but now let's finally differentiate between these three. Okay, starting with the first one, which is antibiotic. So I hope सबने ये वर्ड सुना है कि यार कोई भी तबीयत खराब है, कुछ भी डिजीज हो गया है, so people generally say कि तुमने एंटीबायोटिक ली है ना. सो बेसिकली व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कब एम्प्लॉय किए जाते हैं टू बेसिकली किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस इनटू योर बॉडी. ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ डार्क किया हुआ है विच इज़ पार्शली और होली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल सिंथेसिस. ऐसा इसलिए बोला गया है, ऐसे इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि एंटीबायोटिक सिर्फ नेचर में बन सकते हैं, ठीक है. बट लेटर इट वॉज फाइंड आउट नो, इट वॉज नॉट ट्रू. Even humans can synthesize it in lab. That's why it is partially or wholly produced by chemical synthesis, and in low concentrations inhibits the growth of microorganisms and sometimes even kill the growth of microorganisms. Okay, so this guy, his name was Paul Ehrlich, and he was a German bacteriologist, and he had big aims in life. He wanted to treat syphilis. Okay, syphilis actually is a bacterial infection, and he wanted to treat that. Well, he did that, and he was able to develop the first ever medicine for treating syphilis, which was nothing but salvarsan, and the name again you will have to remember. Okay, it's also called arsphenamine, and both the names you have to remember. और ये जो drug था, it actually attacks the bacteria called spirochete, which causes syphilis. So if you look at the structure of the medicine, this is having an AS-AS double bond or arsenic double bond, and ये important क्यों है हम अभी discuss करेंगे. But the happy news is that Paul Ehrlich actually received a Nobel Prize for his development, so that's great. Okay, well, talking about this double bond, तो ये जो salvarsan था इसमें आप देख रहे हो कि एक arsenic double bond है. Okay, so this guy Paul Ehrlich was not only doing this, but he was also working with azodyes. एजोडाइज क्या होते हैं? एजोडाइज हमारे डाइज होते हैं. डाई मतलब कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, और ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं. ये सबके साथ कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत सिलेक्टिव एजेंट्स के साथ कलर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्वारसन एंड एजोडाई, यू विल जस्ट सी अ सिमिलैरिटी. सल्वारसन में एज यू कैन सी देयर इज एन AS-AS डबल बॉन्ड, एंड एजोडाई में देयर इज N-N डबल बॉन्ड. ओके, सो दिस गाय Paul Ehrlich wanted to combine the features of these two. He wanted to develop a drug, okay, or develop an antibacterial agent which is having antibacterial properties like salvarsan, but at the same time उसके पास selective properties भी होंगी. एक selective drug से ही वो bind करे, ठीक है, which is the property of azodine. And he was able to do that also, and he produced the first ever antibacterial agent which was protonsil. Okay, और protonsil का structure जैसे कि आप देख रहे हो, it is similar to that of your salvarsan, again having a double bond. Now, in the body, this protonsil is actually converted into a different or active agent, which is actually sulfanilamide, जो आप साथ में देख रहे हो. Okay, this is the active or the real drug, and then we have all these drugs which are sulfa drugs. The most important is sulfaperidine, और sulfa drugs की एक history और एक era start हो गई, ठीक है. Now let's talk about penicillium, जो कि एक्चुअली एक फंगस है. ओके, एंड दिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, ऑफ कोर्स फॉर विच ही ऑल्सो रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज. बट दिस वॉज अ रेवोल्यूशन. ओके, बिकॉज देन एक बार penicillium was in the picture, then every other drug was, took a back seat, because this was a revolutionary drug in terms of antibacterial therapy. All right, so this is the structure of penicillin. एंड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट बॉडी में काम कैसे करता है,
दे कैन बेसिकली डू टू थिंग्स. उनका मेन काम क्या है, उनको हमारे बॉडी में से डिजीज़ को रोकना है. ठीक है. सो व्हाट दे कैन डू इज आइदर they can do that by killing the microbes or the pathogens, or they can do that by stopping the growth of the microbes, okay, or inhibiting the action of the microbes. So the one जहाँ पे हम लोग literally मार देते हैं और kill the microbes is called bactericidal, and the one in which we are just not killing them but inhibiting the growth of microbes are called bacteriostatic. So you need to remember the names of bactericidal and bacteriostatic drugs, because this, well, is a question or potential question which can be asked. So penicillin, aminoglycosides, and ofloxacin. So it's very, very important bactericidal drugs. And bacteriostatic, we have erythromycin, tetracycline, and chloramphenicol. सो किसी भी एंटी बैक्टीरियल एजेंट का किसी बैक्टीरिया पे क्या असर पड़ता है वो हम एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी डिवाइड द बैक्टीरिया इंटू टू टाइप्स, विच इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल इनटू व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट इज ग्राम नेगेटिव. बस इतना समझ लो कि दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. So the bacteria or the antibacterial agents which affect both the gram-positive as well as the gram-negative are called broad-spectrum antibiotics. Okay, and the one which affects only gram-positive or only gram-negative are called narrow-spectrum antibiotics, and the ones which only affect only certain bacteria in either gram-negative or gram-positive are called limited spectrum antibiotics. So I hope you guys are clear with what is a broad spectrum, what is a narrow spectrum, and what is a limited spectrum antibiotic. Okay, moving on, this is a very, very important slide which is just a summary as to what is there in the NCERT. Okay, so penicillium is actually a narrow spectrum antibiotic. Ampicillin and amoxicillin are both broad range antibiotics and they are synthetic also. Okay, chloramphenicol, again a very, very important drug. This is a broad spectrum antibiotic. It treats typhoid, dysentery, acute fever, meningitis. So basically whatever you see on your screen are all potential questions. So please, please, please memorize these. I don't know how, but you guys have to. Okay, now in the bottom left you can see a structure of chloramphenicol, again a very important one, so please memorize that also. Okay, now let's talk about antiseptics and disinfectants. Okay, so the major difference between antibiotics and these is that these are not ingested. Just like antibiotics, we ingest them, okay, but here we don't ingest them, but we apply them to living tissues like wounds, cuts, ulcers and all. Okay, and we have to of course remember the examples, which is Dettol, soframycin, furacin, and iodine. Iodine is a very powerful antiseptic. Okay, and boric acid solution in dilute aqueous solution is also a very, very important antiseptic for eyes. And 2-3% of iodine in alcohol water mixture is called tincture of iodine. Again a very important question, because this has been asked in the previous year NEET as well as JEE, so please do remember this slide. Okay, and the most important thing has been written down, where it is 0.2% solution of phenol is an antiseptic, whereas 1% is a disinfectant. Okay, again chlorine in 0.2 and 0.4 ppm in aqueous solution is, and sulfur dioxide in very low concentrations are disinfectants. So please remember these concentrations also. I know I have been telling you to remember things, but guys, trust me, we have to. Okay, now finally we have some examples of antiseptics and disinfectants, which is chloroxylenol, terpineol and bithionol, and these are the structures. Now finally let's talk about the anti-fertility drugs. ये हमारे यूज होते हैं in direction of birth control. Okay, so again you have to remember certain things here. तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हमारी होती हैं, देयर आर सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स. वेल, प्रोजेस्ट्रोन एक ऐसा हार्मोन है, इट एक्चुअली सप्रेसेस ओव्यूलेशन. ऑलराइट, सो ये जो नॉर्थेंड्रोन है, इट इज एक्चुअली ए प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव which is used as a birth control pills, whereas the novestrol one is actually a mixture of estrogen and progesterone derivatives, which again is serving the same purpose. Okay, so now after ending this long video of the entire names, drugs, different type and their therapeutic actions, you all should read out the notes that you just made, and if you did not make it, please ये video दोबारा देखो and make those notes. Okay, you can also do one thing, which is you can head off to EduRev and access their already made notes, and well, that is going to be great for you guys. So please do that, practice the tests, practice the notes, read out the notes, memorize the notes, because that is the only way we are going to be doing this chapter. So thank you so much for watching and stay tuned for more.